Welcome back, guys, on the Gender Studies lecture series on Near Peer. And today we're going to do one of the most important topics on gender studies and the CSS course. और मैंने इस टॉपिक को क्रोनोलॉजिकली डिफरेंट ऑर्डर में रखा है सिलेबस की निस्बत, और इसकी एक बड़ी खास वजह है। मैंने आपसे शुरू में भी लेक्चर में डिस्कस करते हुए किया था कि मैं टॉपिक्स की सीक्वेंस को हमेशा रीअरेंज करता हूँ ताकि उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि समझने में आसानी हो। अब अगर हम सबसे पहला टॉपिक ही विमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं और हमें पता ही ना होता कि एग्जैक्टली बात होती क्या है, जेंडर क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होती है जेंडर की, किस किस्म की बहस चल रही है इस सब्जेक्ट में, तो फिर हमें इस तरह का टॉपिक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो फर्स्ट आई एक्सपोज यू गाइस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक्स ऑफ द जेंडर स्टडीज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड जेंडर स्टडीज। और चूंकि इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंसेस हैं वो बड़े सटल किस्म के हैं, वो बहुत ऑब्वियस नहीं है, तो इसीलिए अगर आपकी कमांड पहले कंटेंट पे, इसके जो सब्सटेंस है उस पर अच्छी हो तो ये टॉपिक को समझना आसान होता है। तो as far as the importance in terms of this topic is concerned, you can see कि पिछले कितने सालों में पास पेपर्स में इसके ऊपर कितने ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। सो एज यू कैन सी 2016 में इसके ऊपर सवाल आ चुका है, जिसमें स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होगा, इसको ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन डिबेट, जो कि हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। इसी तरह डिफाइन एंड डिस्कस द डिसिप्लिन जेंडर स्टडीज एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज 2017 में आ चुका है। 2018 में फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज आ चुका है, और पाकिस्तान के अंदर वुमेन स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में भी आ चुका है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये 4 साल कंसेक्यूटिव इसके ऊपर सवाल आता रहा है। This is going to be the outline. This is going to be the main tangents upon which we're going to cover this topic. So we're going to discuss the introduction, then we're going to do basic comparison, then we're going to look at the context and emergence of women's studies, and then we're going to look at the context and emergence of gender studies, and then we're going to discuss women's studies critique on gender studies. पहले तो इनकी contribution देखेंगे different development practices में, जिसमें वेड, वैड और गैड अप्रोचेस आ जाएंगी। देन हम इन दोनों की एक दूसरे पे क्रिटिक को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे एक जॉइंट कंट्रीब्यूशन की ओवरऑल बॉडी ऑफ थॉट में। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ वुमेन इन जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट with respect to Pakistan. So a lot of depth and detail in this lecture. I would also like to मेंशन कि ये टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस पे अमूमी तौर पे बहुत जेनेरिक और ज़्यादा डेप्थ में कंटेंट मौजूद नहीं था, और इजीली एक्सेसिबल कंटेंट नहीं है। सो आई हैव रिलाइड ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स। सिर्फ इसी लेक्चर के लिए आई हैड टू कंसल्ट मल्टीपल रिसर्च पेपर्स, इनका मैं बीच में हवाला भी देता रहूँगा। सो दैट इज़ वाई सम ऑफ द जार्गन माइट बी टेक्निकली मोर डिफिकल्ट टू अब्सॉर्ब, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज़ borrowed from a lot of research, hardcore research on the subject. So let's start. Basically हम बात करेंगे women studies जो है। अगर मैं बहुत सिंपली बात करूँ तो सबसे पहले इमर्ज की थी, और जेंडर स्टडीज women studies के बाद इमर्ज की है। So women studies सिर्फ खातीन के इश्यूज से रिलेटेड थी, खातीन ने क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं, जो भी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते आए हैं। और एंड women studies also led to the development of WID and WAD in the 70s. Gender studies discuss the issues of women, but with more depth and more diverse approaches. It also studies its men's relationship with women, how society structure, how power dynamics operate, how different stakeholders operate in the gender norms, और किस तरह लोगों की आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट होती है। अब हम अगर बेसिक कंपैरिजन की बात करें तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास। So, women's studies is an academic field that draws on first feminist and second interdisciplinary methods. हम interdisciplinarity के ऊपर भी एक पूरा लेक्चर करेंगे, but interdisciplinary generally speaking means कि जब आप multiple disciplines का knowledge use करते हुए आपको ये चीज़ create कर रहे हैं. So you're using the knowledge of subject A and also subject B to create the knowledge of subject C, then that is interdisciplinary in nature. So multiple disciplines. So जैसे हमने देखा कि हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिनके अंदर हिस्ट्री की भी चीज़ें हैं, जिनके अंदर साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, जिनके अंदर लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो
it's pretty evident that both gender studies and women's studies are interdisciplinary in nature. So, in order to place women's lives and experiences at the center of the study while examining social and cultural systems and system of privilege and oppression in society. Gender studies is the field of interdisciplinary study devoted to analyzing gender identity and gendered representation. So while women's studies focuses exclusively on women, gender studies includes women's studies. This plus so जो women's studies से related चीजें आ गई, feminism, gender, politics, plus men's studies and queer studies. So इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा diverse range of subjects आते हैं gender studies में. Women's studies is the parent discipline of gender studies, and gender studies is the posterity of women's studies. Women's studies led to the development of women in development and women and development approach, and gender studies led to the gender and development approach. Now let's look at these two different types of studies in detail. So सबसे पहले हम women's studies की बात करें. वुमेन स्टडी की जो इमर्जेंस थी एक एकेडमिक एंटरप्राइज के तौर पर, वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के दौरान हुई थी. तो 1960s के अंदर जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही थी और पॉलिटिक्स ऑफ सेकेंड वेव चल रही थी, डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही थी, मूवमेंट्स चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो women studies emerged as the educational arm of that movement and originated as a challenge to male defined and male centered knowledge. तो जहां वो पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स अफेयर्स में और हर चीज में चैलेंज कर रहे थे स्टेटस को, वहीं सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर विमेन स्टडीज का कॉन्सेप्ट इमर्ज किया कि जो नॉलेज की दुनिया है, जो एकेडेमिया है, हम जितनी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस अब तक पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेल सेंटर्ड है. इट्स वेरी आल्सो कॉल्ड एंड्रोसेंट्रिक, मेल सेंट्रिक. सो अ लॉट ऑफ एंड्रोसेंट्रिक perspectives are there in this subject rather than more holistic picture, which incorporates women and experiences of other marginalized groups as well. Hence, this emerged as a challenge to that status quo in the world of knowledge, in the world of academia. Students studying sociology now take it for granted that gender is central to sociological answers. That was not always so. अब हम sociology पढ़ते हैं, आप different courses उठाते हैं, आप even international relations पढ़ते हैं, आप political science पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं feminist centric analysis भी लाजमी होता है. Sociology में तो बिलखुसूस होता है. And we take it for granted that it's part of this course, but that is not true. ये exclusively women studies की और उसके बाद जेंडर स्टडीज की मेहनत का नतीजा है, उनकी काविशों का नतीजा है कि कैसे तमाम बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर जेंडर स्टडीज के आइडियाज और वुमेन स्टडीज के आइडियाज परमिएट किए. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इमर्जेंसेस की किस तरीके से अर्ली सोशियोलॉजी एंड वुमेन एक्टिविज्म. जो 1960s में और 1970s में सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, दैट वाज प्राइमरली द सोशियोलॉजी ऑफ मेन इन अ वे दैट दे रिप्रेजेंटेड द होल सोसाइटी, और उसके अंदर भी प्राइमरली वाइट वेस्टर्न मैन. Women featured only briefly in lectures on family and kinship, but zyada detailed analysis, women's perspectives, their issues, their challenges were never given in sociology. This was not a problem peculiar to sociology. Women in other disciplines were facing similar biases as well. And some activists who were inspired by feminist ideas began to complain about this fact कि औरतों की women-centric knowledge नहीं exist करता, women-centric perspectives नहीं exist करते different body of knowledge के अंदर. And hence they started developing this new completely body of thought that would be centered around perspectives and experiences and issues of women. By the middle of 1970s, feminists began to organize across disciplines as well as within them. Young feminist academics and graduate students met to discuss the possibility of launching women's studies as a new women-centered way of knowing that would challenge the prevailing androcentric, which means male-centric view of society and culture prevalent in the humanities and social sciences. यही बात जो हमने अभी डिस्कस की है. उस वक्त साइंस सब्जेक्ट्स को तो आप छोड़ दें, अभी तो हम ह्यूमैनिटीज की बात करें. साइंस सब्जेक्ट्स तो obviously male dominated थे back then. Women's studies understanding of itself as the educational arm of the women's movement signified engagement with politics of knowledge. इस तरह मैंने आपको बताया कि they acted as the educational arm of that movement. But इसमें एक बड़ी important चीज़ है, the politics of knowledge. So अगर तो आप कोई किसी चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स being about your ability to give and take, your ability to share political power in society, your ability to have a stake in society, which women lacked, and they were actively fighting to get that.
दैट स्पेस, दैट पावर इन सोसाइटी। तो अगर आप ये पॉलिटिक्स करें तो उसके साथ साथ आपकी मेन स्ट्रीम के अंदर आपका नैरेटिव भी होना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज और एकेडमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक एवेन्यू है जहां से ये नैरेटिव पेनिट्रेट करता है सोसाइटी के अंदर। हेंस दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज। सो नॉलेज इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज, एंड द काइंड ऑफ नॉलेज एंड द काइंड ऑफ नैरेटिव इज क्रिएटेड इन सोसाइटी इफेक्ट्स पॉलिटिकल पावर इन सोसाइटी। हेंस जो टीचिंग एंड सोशल रिसर्च थी वो सोशो पॉलिटिकल चेंज के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाती है। Women's studies offered feminist politics and institutional location. By the end of 1960s, the teachings of women's studies had started in some universities of America. Less than 20 women's studies courses existed in America at that time. तो 60s के अंदर women's studies courses से मुराद के भी नया पूरा डिपार्टमेंट कोई women's studies का नहीं बना था, लेकिन उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ही, सोशियोलॉजी के अंदर, लिटरेचर के अंदर, इधर उधर कोर्सेज ऑफर होना शुरू हो गए women's studies से रिलेटेड। तकरीबन 20 थे ये 1960s में। उसके बाद उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हो गए जिनको विमेन स्टडीज सेंटर कहा जाता था। दिस मॉडल इंस्पायर्ड अदर कंट्रीज टू स्टार्ट such centers as well. In the 1970s, first women studies program was approved at San Diego State University. The first women studies courses at postgraduate level, ये तो undergrad level पे था, postgrad level were set up in the early 1980s, initially at Kent and Bradford, and then New York, followed by many others. Throughout the 1980s, both undergrad and postgraduate women's studies sprang up in universities. तो वो यूके में भी हर जगह फैले। women's studies network के नाम से ये मशहूर हुए यूके के अंदर, जिनको बाद में feminist and women's studies association कहा गया। तो अगर मैं आपको इसकी टाइमलाइन दूं, 1998 में by the way उसके बाद there were 9 PhD programs in America and in Canada. So ये सारे different programs कैसे शुरू हुए? Today the women's studies courses are offered in 700 colleges all over the globe. That also includes the universities in Pakistan. So this is the timeline. 1960s के अंदर हमारे सामने सिर्फ individual courses के तौर पे सबसे पहले women's studies के courses आते हैं। 1970s में उनका पूरा women's studies program आ जाता है, पूरा undergrad bachelor's program आ जाता है। 1980s के अंदर हमारे पास इसमें undergrad और grad programs पे आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आते हैं, और 1998 तक हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम्स वुमेन स्टडीज में आते हैं। सो इन अ मैटर ऑफ 30-40 years, with 30-40 years of struggle from having a no individual course to creating a PhD program, ये struggle इन्होंने cover की। The first women studies courses ये तो हमने discuss कर लिया, so this is irrelevant. Now, what were the early challenges that the women studies faced? Before that, by the way, जो हमने second wave feminism के अंदर discussion की थी, उसके अंदर आप ये जो हमने भी discuss किया है women studies वाला aspect, आप इसको include कर सकते हैं that how second wave feminism gave birth to the whole body of thought of women studies. Early challenges क्या थे women studies को? 1980s was very difficult time for new academics because Margaret Thatcher का era था United Kingdom में, और अगर हम US में बात करें तो रोनाल्ड रेगन का टाइम था। इन दोनों की का जो अलायंस था थाचर और रेगन का, ये न्यू लिबरल पॉलिसीज पे को फोकस करते थे। न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज फिस्कली कंजर्वेटिव पॉलिसीज होती हैं जहां पर वो ऑस्टेरिटी, स्पेंडिंग कम करना, बजट को बैलेंस करना, यानी स्टेट ज्यादा डीरेगुलेट करती है, ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है, खुद सब्सिडाइज कम करती है चीजों को। तो ऑटोमेटिकली इस तरह की इकोनॉमिक फिलोसफी के अंदर डिफरेंट सोशल सेक्टर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बजट अमूमी तौर पे कम कर दिए जाते हैं। तो थाचर एरा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के ऊपर कट्स लगाए, एकेडमिक जॉब्स जिसकी वजह से इफेक्ट हुई, कम हुई, जॉब मोबिलिटी कम होना शुरू हुई। तो इसलिए वुमेन स्टडीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन द फेस ऑफ दिस लैक ऑफ फंडिंग हाउ टू डेवलप एंड ग्रो। बट हाउएवर वो जो 60s और 70s के एरा के, उससे पहले एकेडमिया में जो आ चुके हुए थे, उन लोगों ने वो लोग इतने ऑलरेडी फेमिनिस्ट्स आ चुके हुए थे एकेडमिया के अंदर that a critical mass had been reached who had already committed it themselves to developing this subject. उसके बाद इसका आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू होता है, हमें नजर आता है। डिक्लाइन इस तरीके से नजर आता है हमें कि चूंकि कट्स हुए थे फंडिंग में स्टूडेंट्स की, तो जिसकी वजह से जो बहुत
मतवसत तबका के या लोअर मिडिल क्लास लोग थे जो इतने प्रिविलेज नहीं थे, वो इसमें अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते थे। और फिर चूंकि इसमें जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर सेफ ऑप्शंस like engineering, like more science oriented courses that guaranteed employment. तो इस वजह से women studies के अंदर enrollments और teaching दोनों चीजें कम होना शुरू हो गई women studies के अंदर. As numbers declined 1990s and early 2000s, many degree programs were effectively then shut down. While there were a few new ones at postgraduate level, freestanding undergraduate degrees gradually disappeared. तो bachelor's के अंदर ये degrees कम होना शुरू हो गई. Although a few universities still offer women or gender studies route through other degree programs. So इसके बाद हम आते हैं जेंडर स्टडीज पे. तो जहां जैसे वुमेन स्टडीज का डिक्लाइन नजर आता है, वहां में जेंडर स्टडीज आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इमर्ज होती हुई नजर आती है एक पैरेलल टाइम के अंदर. जेंडर स्टडीज इफेक्टिवली वैसे तो मिड 80s के अंदर डेवलप होना शुरू हुई, और ये एक बड़ी कंटेस्टेड सी डेवलपमेंट थी बिटवीन दीज टू बॉडी ऑफ थॉट. जो लोग जो हार्ड लाइन फेमिनिस्ट थे सेकंड वेव के अंदर, वी डिस्कस के सेकंड वेव के अंदर रेडिकल फेमिनिस्ट ज्यादा थे, ज्यादा हार्ड लाइनर्स थे, और जो बहुत कमिटेड थे उसके साथ दे, और उन्होंने जिन्होंने वुमेन स्टडीज को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आए थे, they were very antagonistic to the idea of gender studies. They wanted to keep women studies as women studies because they thought that by incorporating men's studies, by incorporating other studies into this fold, it will overshadow women centered approach. तो हम औरतों की इश्यूज पे ज्यादा दोबारा फोकस नहीं कर पाएंगे, और मेन स्टडीज और दूसरी जो स्टडीज LGBTQ स्टडीज वो डोमिनेट कर जाएंगी. Hence, we should keep women studies as a separate enterprise, and there should be no gender studies. तो ये उनका इशू था इससे. बहरहाल जेंडर स्टडीज डेवलप्ड आउट ऑफ women studies. इसने women studies को पकड़ा और दूसरे इश्यूज को ऐड करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया. It increasingly became more usual to describe the field of study to which gender and gender relations are central as gender studies rather than women's studies, which reflects a historical chronological shift as well as an intellectual connections and the growth of empirical research in the field. Although gender studies are relatively recent in the academy, most are built in the 1970s and 80s, and women's studies center हमारे पास North America में Australia, European countries में develop हुए. ये ज्यादातर जेंडर स्टडीज का फिर सब्जेक्ट डेवलप हुआ, उसके अंदर एम्पिरिकल एविडेंस और रिसर्च एंड स्कॉलरली वर्क ऑन पॉलिटिकल चेंज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया, टू गिव इट अ मोर, टू मेक द सब्जेक्ट मोर रिगरस, मोर डेटा ड्रिवन, मोर एडवांस टूल्स ऑफ सोशल रिसर्च यूज करते हुए इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई. Feminist studies, especially feminist theories, remain central to the field, although gender studies like women's studies are also marked by sometimes diverse and sometimes overlapping intellectual traditions and movement, which obviously different times में different चीजें incorporate होती रहती हैं. हर subject के अंदर उस वक्त के हालात हाजरा की चीजें discuss होती हैं और वो ज़्यादा important हो जाती हैं. और इसी gender studies ने फिर देखा कि किस तरीके से liberal, Marxist, socialist, radical, feminist strands of women's movement से शुरू हुए ये, and then they also included the concepts of black feminism, ethnicization, racialization, issues of bodies and corporeality, disability, sexuality, class, defined geographically located inequalities. ये सारी चीजें फिर gender studies का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनना शुरू हो गई. So very simplistic women centered approach to defining women in a very particular category to this एक बड़ी evolving nature थी gender studies की. So gender studies became a very diverse subject. The shift towards gender studies also reflects a widening intellectual base. So women studies की base सिर्फ women oriented issues के ऊपर थी, जबकि gender studies की base बहुत wide array of subjects पे base करती थी. So for instance, gender studies की जो theories हैं, they are based on psychological as well as psychoanalytical theories. They are based on post-structuralism, post-colonial studies, critical studies of masculinity, queer studies and LGBTQ studies, critical race theory, critiques of whiteness, ecological feminism and materialist feminism, and technoscience studies. So इतनी different studies को इसीलिए इसको interdisciplinary भी कहा जाता है. So gender studies is a broad church, but it's also a field that is hotly contested.
जेंडर स्टडीज ने अपने अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ इसकी इंटेलेक्चुअल बेस बहुत डाइवर्स है कंपेयर टू वुमेन स्टडीज। तो हम इन पे दो स्पेसिफिक चीजों के ऊपर अभी फोकस करेंगे कि जेंडर स्टडीज में दो नई कौन सी एडिशंस थी जो वुमेन स्टडीज में सिरे से नहीं थी। सो जेंडर स्टडीज ने एक तो मेन स्टडीज को इनकॉर्पोरेट किया अपने अंदर, और दूसरा जेंडर स्टडीज ने क्वेयर स्टडीज, दूसरा क्वेयर स्टडीज को इनकॉर्पोरेट किया जो कि वुमेन स्टडीज में बिल्कुल नहीं था। एंड दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल के इन द नेक्स्ट लेक्चर के क्या वो मेन स्टडीज के एस्पेक्ट्स थे जो कि जेंडर स्टडीज ने फिर इवेंचुअली एम्ब्रेस की और क्वेयर स्टडीज के। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेम टॉपिक in the next lecture. Hi guys, we're going to continue with the previous lecture. हमने डिस्कस किया था जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ के डिफरेंसेस के अंदर, हम देख रहे थे कि जेंडर स्टडीज़ हाउ इट इज़ मोर इनकैम्पसिंग। तो उसके अंदर जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़, सॉरी जेंडर स्टडीज़ एंड मेन स्टडीज़ का कंपैरिजन अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि कैसे जेंडर स्टडीज़ हैज़ इनकॉर्पोरेटेड मेन स्टडीज़ एज वेल. The last 3 decades have witnessed an increasing interest in the study of men and masculinities as a result of and complement to feminism, women's studies, and gender studies. Men's studies is an interdisciplinary academic field devoted to topics concerning man, masculinism, gender, and politics. It often includes masculinist theory, men's history and social history, men's fiction, men's health, masculinist psychoanalysis, and the masculinist and gender studies influence practice of most of humanities and social sciences. तो gender studies में men studies भी included है, जबकि women studies में ये नहीं थी. जेंडर स्टडीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उसने क्वेयर स्टडीज को भी अपने अंदर इंक्लूड किया. क्वेयर स्टडीज or the LGBTQ studies, lesbian, gays, bisexual, trans studies, the study of issues related to sexual orientation and gender identity, focusing on lesbian, gay, bisexual, transgender, gender dysphoria, asexual, queer, questioning, intersex people and queer cultures. तो इन एरियाज पे भी तमाम डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी और उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस और उनके ऊपर जो जितनी थीरीज हैं वो भी इसका हिस्सा हैं जेंडर स्टडीज़ का. अब हम कंपैरिजन देखते हैं दोनों का कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर. तो वुमेन स्टडीज गेव वे टू विड एंड वैड अप्रोचेस, पहले भी हमने डिस्कस किया है. अब यहाँ से विड और वैड में से थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको लेक्चर पहले बताया उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके इसको थोड़ा फैला सकते हैं. जेंडर स्टडीज गेव वे टू गैड अप्रोच. ठीक है. आगे है जेंडर स्टडीज क्रिटिक ऑफ वुमेन स्टडीज. अब दोनों की क्रिटिक्स देखेंगे एक दूसरे के ऊपर. जेंडर स्टडीज के जो एडवोकेट्स हैं वो वुमेन स्टडीज पे क्या क्रिटिक करते हैं. They believe that the pragmatic reason for this shift from women to gender studies is that it is seen as less feminist, more respectable and less threatening than women studies. ठीक है. तो ये उनका आइडिया है. While the term gender was initially used by feminists to establish the social as opposed to natural base of hierarchy and division between men and women, this meaning has largely been lost in its incorporation into everyday language. Their gender therefore has come to be seen as more safe and neutral term. Women's studies appeared to be more threatening, more radical in its name. So gender studies is basically appears to be more respectable and less threatening academic discipline and has greater chance of survival. Second, another objection to women's studies is the problem with women as a category. So ये basically idea है कि women is not a unitary category और women all women are not same, they have different experiences. और वो intersectionality वाला जो पूरा concept है ना कि आपकी different identities add basically to give you a personality. So इसीलिए queer, lesbian, gays, bisexual, लोअर क्लास, कलर्ड, ब्लैक, इन तमाम औरतों के एक्सपीरियंसेस को इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है. और आप एक वाइट वॉश नहीं कर सकते कि वुमेन इज़ अ वन कैटेगरी. हर एक के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन सबको इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है. इसलिए जेंडर इज़ अ मोर inclusive term to use. Third is the premise of gender studies is that to fully grasp the experience of women, the experience of men, and now all genders must be examined to reveal the power and the relations that leads to oppression. How can you understand oppression without knowing anything about the oppressor? कि आपको हर जेंडर के बारे में और खासतौर पर मर्दों के मामले में समझना भी बहुत ज़रूरी है. जेंडर स्टडीज़ की का ये कहना है जो कि वुमेन स्टडीज़ नहीं करता. जेंडर स्टडीज़ इज ऑल्सो मोर इंक्लूसिव देन वुमेन स्टडीज़.
Gender in academic terms reflect a broad concept that goes beyond women's studies. It includes all kind of genders, which has been the principle of feminist inclusiveness. कि वो जो feminist inclusiveness का concept है ना कि तमाम different तरह के लोग, sexual orientations के लोग, gender identity के लोग included हो, वो women's studies में नहीं हो पाता, वो gender studies में हो पाता. Feminists think that women's studies would compromise itself as a name more innocuous than say feminist studies. तो जब विमेन स्टडीज वाले कहते थे ना कि जेंडर स्टडीज वालों ने कॉम्प्रोमाइज किया और एक लेस थ्रेटनिंग वर्ड ले लिया एंड दे हैव बेसिकली स्केयर्ड, दे हैव गॉटन स्केयर्ड, तो विमेन स्टडीज वाले कहते थे तो आपने जेंडर स्टडीज वाले कहते थे कि आपने जो विमेन स्टडीज नाम लिखा है ये भी एक कॉम्प्रोमाइज का नतीजा है, वरना ओरिजिनली नाम तो फेमिनिस्ट स्टडीज रखा जाना चाहिए था. आपने भी फेमिनिस्ट स्टडीज से विमेन स्टडीज इसलिए रखा ताकि आप लेस थ्रेटनिंग लग सकें, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लग सकें और लेस रेडिकल लग सके. तो अगर अब हमने वुमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज कर लिया तो अब आपको कम रेडिकल लग रहा है. There are feminist scholars, और ये बात ठीक भी है because there are very feminist scholars who think that gender studies was more radical, यानी कि कम radically more radical है, since it held men accountable for their privilege and made them responsible for change along with women as well, क्योंकि मर्दों को भी वो एग्जामिन करते हैं. Gender studies comes about because there is plenty of social behavior to be analyzed in terms of gender, especially from a feminist perspective that is not specifically about women. तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जेंडर के रिलेटेड जो एग्जामिन करने की ज़रूरत है या एग्जामिन होती हैं जो इनका ताल्लुक ख़वातीन से नहीं है, तो इसीलिए उनको वो फिर जेंडर स्टडीज़ ही केटर कर सकता है. लेट्स से द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ होमोसेक्सुअल मैन, अ ब्लैक मैन, ये सारी चीज़ें वुमेन स्टडीज़ नहीं इंकॉर्पोरेट करेगी बट जेंडर स्टडीज़ करेगी. अब इसके बरक्स वुमेन स्टडीज़ की क्या क्रिटिक है जेंडर स्टडीज़ की. पहले हमने बाद में आने वालों की पहले आने वालों पर क्रिटिक देखी है, अब हम पहले आने वालों की बाद में आने वालों पर क्रिटिक देखेंगे. The use of term gender fails to focus on subordination of women as a result of women's oppression and exploitation, injustice and structural patriarchal violence. According to them, gender studies is responsible for depoliticizing feminist scholarship. कि वो जो आपने less threatening, less radical, more acceptable बनाया, तो आपने depoliticize किया feminist scholarship को. To them, even using gender as a category to study men, women's perspectives, actions and concerns can be omitted, and the idea that men are the central actors in human societies and women the passive receptors of their action is reinforced. ये कहते हैं according to this paper कि women studies वाले कहते हैं कि जब आप gender studies में men's literature, men's history, men's studies भी incorporate करते हैं तो फिर आप women को दोबारा sideline कर देते हैं. Second, old guards in women's studies considered gender studies was a retreat from a more radical women's studies. कि women's studies का subject, उनकी appearance, उसके research subject ज़्यादा radical थे और gender studies बड़ा docile है उसके मुकाबले में, जो old guard है women's studies का. क्योंकि वुमेन स्टडीज हमने आपको पता सेकंड वेव फेमिनिज्म के नतीजे में निकली थी जनरली, और ये थर्ड वेव के ब्रॉडली स्पीकिंग, और सेकंड वेव ज़्यादा रेडिकल थी, थर्ड वेव ज़्यादा लिबरल थी. देयर आर फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हु थिंक दैट जेंडर स्टडीज वाज मोर रेडिकल सिंस इट हेल्ड मैन इवन दो even though ये इसमें नहीं आएगा, ये पिछले वाले से, but at the same time they would be opposed to the word feminist. Many male faculties have no problem with gender studies program because it is not feminist. तो वो ये कहते हैं कि depolitics आपने बड़ा less radical कर दिया, क्योंकि gender studies अब does not necessarily equal to being feminist studies या feminism के equivalent नहीं है. आप gender studies पढ़ के भी non feminist हो सकते हो, तो आपने बड़ा इसे docile बना दिया, भी radical नहीं रहा. जबकि वुमेन स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स या जो अप्रोच थी वो पूरी फेमिनिस्ट अप्रोच थी. दिस क्रिटिक इज नॉट नेसेसरली ट्रू, क्योंकि मॉडर्न जेंडर स्टडीज जो है वो काफ़ी फेमिनिस्ट लिटरेचर के ऊपर ही सारी बेस करती है. तो ये बस एक पुरानी एक उनकी फेटिश है. इन जेंडर स्टडीज वुमेन आर एज एन अप्रेस्ड ग्रुप दैट वी कैन रिसर्च एंड स्टडी डिसअपीयर्स. इन जेंडर स्टडीज के अंदर हम ख्वातीन को एज एन अप्रेस्ड ग्रुप स्टडी करना बंद कर देते हैं. तो ये क्रिटिक है वुमेन स्टडीज की. All we have in gender studies becomes different groups or cultures within a mainstream culture. Women studies exist to study women. वो कहते हैं कि women को as a category study करना बड़ा ज़रूरी है, because a lot of women, despite being different, share a lot of common experiences. तो उनको as a common हमें study करने की ज़रूरत है. While gender studies accommodates men, वो कहते हैं कि gender studies जो है वो accommodate करती है मर्दों को.
Women studies argues that until they have equal interdisciplinary research that is truly gender free, they must study women and not gender so that they can catch up intellectually, theoretically and of course politically. वो कहते हैं कि मर्दों के रिलेटेड जो स्टडीज हैं या मर्दों के का रोल जो हिस्टोरिकली रहा है या दूसरे लोगों का भी, वो बाकी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऑलरेडी करते आए हैं. पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में चीज़ें डिस्कस होती आई हैं, मेल पर्सपेक्टिव से ही होती आई हैं. तो चूंकि हम ऑलरेडी लैग कर रहे हैं वुमेन स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, ख़वातीन की स्ट्रगल्स के बारे में इंटेलेक्चुअली, थ्योरेटिकली और पॉलिटिकली, तो जब तक हम कैचअप नहीं कर लेते ना, तो तब तक हमें अपनी सारी एनर्जीज सिर्फ वुमेन स्टडीज़ को और ख़वातीन को एज अ कैटेगरी स्टडी करने में लगानी चाहिए ताकि हम कैचअप कर सकें. फिर हम लेट से इनकॉर्पोरेट करके जेंडर स्टडीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं. ये उनकी क्रिटिक थी. मगर बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो दोनों की बहुत कंट्रीब्यूशन है. ये बड़े थोड़े एकेडमिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान, बट ओवरऑल जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ ऑफ स्टडीज इज इनॉर्मस. द ट्रेडिशनल करिकुलम teaches us all to see the world through the eyes of privileged white European males and to adopt their interests and perspectives as our own. तो इन्होंने चेंज किया है इस पूरी स्कॉलरशिप को. वो ये कहते हैं कि हमने सारी जो भी हमारी हिस्ट्री, जो भी हमारी स्टडीज़ रही हैं एकेडमिक्स के अंदर, वो सारी प्रिविलेज वाइट यूरोपियन मेल्स के पर्सपेक्टिव की रही हैं. तो इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और चैलेंज किया. वो ये कहते हैं कि इट कॉल बुक्स बाय मिडिल क्लास वाइट मेल राइटर्स लिटरेचर एंड ऑनर्स देम एज टाइमलेस एंड यूनिवर्सल while treating the literature produced by everyone else as idiosyncratic and transitory. The traditional curriculum introduces the mythical white middle class patriarchal heterosexual family and its values, calls it Introduction to Psychology. Sarcastic comments are here. It teaches the values of white men of property and position and calls it Introduction to Ethics. It reduces the majority of people in the society to women and minorities and calls it Political Science. It teaches the art produced by privileged white men in the West and calls it art history. तो ये इस पेपर से मैंने लिया, पटेल 2013. और इनकी जॉइंट कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने डिफरेंट फेमिनिस्ट थॉट्स को जन्म दिया. इनके थ्रू हमारे सामने लिबरल फेमिनिस्ट थॉट आई, दोज हु फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन. मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की थॉट जनरेट हुई, दोज हु लोकेट वुमेन सबऑर्डिनेशन एंड इन class contradictions. Radical feminism consider patriarchy as the main culprit for economic growth. Socialist feminists believe that women's predicaments are determined by complex interplay of class, caste, race, religion, ethnicity with patriarchy, hence the need for deconstructing patriarchy in different socio-cultural, geopolitical and historical contexts. बड़ी brief definition मैंने डाली है क्योंकि आप बता रहे हैं कि women's studies, gender studies ने overall contribution से ये thoughts generate की. Psychoanalytical feminism include हुआ which focus on individual's journey of women to arrive at mental makeup and internalization of values by the people concerned. They critique Freud for its misogyny but also acknowledge Freud's analysis of childhood experiences playing an important role in the rest of his life. Postmodern feminism contests hegemony of meta theories and dominant discourses and bring to the fore the voice of the subjugated, oppressed and the marginalized. They emphasize decentering from the mainstream. ठीक है. Ecofeminists believe that women's role in the subsistence economy is crucial for the survival of humankind. Women have symbiotic relationship with Mother Nature. Male-dominated development models are violent towards Mother Earth and women. Black feminism इसी तरह निकला. Feminism basically जो Afro-American feminism की नतीजे में निकला. Race is a central reality for black feminists, though they also challenge the patriarchy, male domination. Feminism is a contribution of Afro-American feminists who believe that in spite of barbaric experiences of slavery, subjugation, horror, the black culture celebrations have survived due to women's resilience. There is a need to promote this celebration's cultural legacies through heritage of oral histories, legend, grandmother stories. They believe that the non-white and colored women must be proud of their history instead of aping the white, consumerist and oppressive male culture. ठीक है. Status of women's studies and gender studies in Pakistan. ये डॉक्टर कमाल अहमद मुनीर जो कि फॉर्मर डीन है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के, उन्होंने इसके मतलब कमेंट किया था कि since the late 1980s women and gender studies programs have been established at higher education institutions across Pakistan. Today, with curricular standards of women's university formalized by the HEC, just under 15 universities offer bachelor's, master's, PhD and distance courses. Indicative of its spread, gender studies is now topic in the Central Superior Services examination for which you're preparing right now.
वुमेन स्टडीज करिकुलम फॉर हायर एजुकेशन वाज अप्रूव्ड बाय एचईसी इन 2012. 2012 में वुमेन स्टडीज करिकुलम अप्रूव किया एचईसी ने. फिर इसको चेंज करके और करिकुलम को रिवाइज किया और टाइटल को दोबारा से रीडिफाइन करके 2017 में जेंडर स्टडीज का नाम दे दिया गया 2017 में एचईसी की जानिब से. अब ये वो हैं बेसिकली बैचलर्स डिग्री. पाकिस्तान में अक्सर आता है ना सवाल के स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान. तो आपके पास लिस्ट है ये 12 यूनिवर्सिटीज़ की कि जहाँ पर बैचलर्स डिग्री ऑफर हो रही है. अगर आपको कोई एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी का पता है या इनमें से किसी में अगर बंद हो गया तो आप मुझे करेक्ट कर दें और ऐड कर दें अगर आपके पास है तो. डू शेयर इन द एडमोडो क्लासरूम. बट एज फॉर माई नॉलेज एंड माई रिसर्च इज कंसर्न दीज आर द यूनिवर्सिटीज विच आर ऑफरिंग बैचलर्स डिग्री. और ये आपको लिस्ट लिखनी है पेपर में जब स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज का पूछा गया पाकिस्तान में. एमफिल डिग्री इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है. और पीएचडी जो है वो सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में. लेकिन इसके अलावा एकेडमिक इनिशिएटिव्स दूसरे लिए हुए हैं काफ़ी. पाकिस्तान जर्नल ऑफ वुमेन स्टडीज़ आलम नुस्वा बाय सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ये उन्होंने पब्लिश किया है. ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये क्या वो पब्लिश करते हैं बेसिकली आप ये लिख सकते हैं उसके नीचे. मैंने आपके सामने लिस्ट कर दिया. वट एवर यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस अपने नोट्स में टैली करें इसको एंड दिस यू कैन राइट. और सईदा वहीद जेंडर इनिशिएटिव लम्स में उन्होंने शुरू किया है. उसका क्या एम है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और वो किस लिए डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर. ऑलराइट, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान. तो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ये कि पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सिग्निफिकेंस जेंडर वुमेन स्टडीज़ की, क्योंकि देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल स्फीयर, देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्फीयर, देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक स्फीयर. जेंडर बेस्ड वायलेंस है हमारे यहाँ, पेट्रियार्कल जेंडर नॉर्म्स हैं. इस तरह के इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड ओनली व्हेन अ सिस्टेमिक अटेम्प्ट फ्रॉम ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग द एकेडेमिया इज वेज्ड अगेंस्ट पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी. ठीक है, तो ये तब ही पॉसिबल है. तो आप वैसे इसमें जनरल बातें पहले लिख सकते हैं कि काफ़ी इश्यूज जो हम अभी तक डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और इनको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है. इम्पैक्ट क्या रहा है जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ का? दे हैव been responsible for raising responsible men, raising strong women, changing societal attitudes, creating women-centered knowledge, creating levers of reforms and building coalitions के जिसमें academia, policy makers, enforcement of state enforcement, क्या कहना चाहिए कि basically there is a coalition building between academia, the liberal academia जो gender women studies के centers हैं them and the policy makers and those who implement those policy, the executive on the ground. इनके बीच में जो है वो coalition की तरफ हमें नज़र आता है स्टेप. सो ये बेसिकली बड़े कॉम्प्रिहेंसिव से डिफरेंसेस है वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ में. आगे वाले लेक्चर में आप इंटरडिसिप्लिनरी नेचर और वो वाली चीज़ें भी देखेंगे तो होलिस्टिकली सब्जेक्ट का आपको पता चलेगा. ये चीज़ मैंने काफ़ी एंड पे इसलिए रखी है इवन दो ये टॉपिक में पहले आती है क्योंकि अगर ये बात आपको पहले बता दी जाए तो आपको समझ नहीं आएगी बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है. तो अभी हमें सब्जेक्ट की समझ आई है जब हमने शुरू से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है कि होता क्या है, सब्सटेंस क्या है इसकी, थीरीज क्या है, डील किन चीज़ों से करता है. उसके बाद जब हमने डिफरेंसेस पढ़े वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ का तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी इसकी. इंटरडिसिप्लिनरी होने की भी इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी. पहले आपको नहीं आनी थी क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं और जेंडर स्टडीज़ के इंस्ट्रक्टर्स जो मार्केट में वो भी यही गलती करते हैं कि ये चूँकि सिलेबस में पहला टॉपिक है तो लोग इससे स्टार्ट करते हैं. मगर पेडागोजिकली दिस इज़ अ बैड क्रोनोलॉजी. शुड स्टार्ट विद अदर टॉपिक्स so that people get to know what the subject is bit by bit by baby steps, but ultimately when they develop that command and that jargon and that understanding then आप इस पे move करें. and I'm sure this will help you guys to understand this topic better and I hope this was helpful to you guys. I'll see you guys next time. Guys, welcome to the gender studies lecture series on Napier. और आज का हमारा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसपे आज अभी तक तो until 2020 पास पेपर में डायरेक्ट सवाल तो कोई नहीं आया लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत कहीं ना कहीं अप्लाई होते रहे जब हम वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं, जब हम ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन की बात करते हैं. और ऑल्सो बिकॉज अभी तक नहीं आया तो लेकिन मुस्तकबिल में चांस है कि आ जाए क्योंकि जेंडर का कोर्स कम है तो इसीलिए जो जो टॉपिक्स रहते हैं वो फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं. सो दैट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक as well if you come to think about it. So this is going to be the outline of this discussion. First we're going to conceptualize what interdisciplinarity is,
फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरडिसिप्लिनरिटी में और मल्टीडिसिप्लिनरिटी में क्या फ़र्क है। फिर हम डिफाइन करेंगे जेंडर को इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। फिर डिफरेंट अप्रोचेज टू जेंडर इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स देखेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे इंटरडिसिप्लिनरी है जेंडर स्टडीज़, उसका क्या एविडेंस है, कैसे इवॉल्व की, और ये वाइडर इंटरडिसिप्लिनरी मूवमेंट में जेंडर स्टडीज़ कैसे फिट आती है, और किस किस सब्जेक्ट के साथ ये ओवरलैप करती है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंटरडिसिप्लिनरी हैं, और फिर हम इसका एक जायजा लेंगे। सो कंसेप्चुलाइजिंग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, सबसे पहले तो वी गोइंग टू डिफाइन व्हाट interdisciplinary study is. Interdisciplinary studies involve the combining of two or more academic disciplines into one activity. So बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में आप मल्टीपल डिफरेंट फील्ड से, मल्टीपल डिफरेंट स्टडीज से, मल्टीपल डिफरेंट सब्जेक्ट से आप नॉलेज ड्रॉ करते हैं, बट इट इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग बाय थिंकिंग अक्रॉस बाउंड्री। सो आप डिफरेंट चीज़ों से चीज़ें इकट्ठी कर कोई एक चीज़ क्रिएट करते हैं। द टर्म interdisciplinary is applied within education and training pedagogies to describe studies that use methods and insights of several established discipline or traditional fields of study. अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इंटरडिसिप्लिनरिटी में और मल्टीडिसिप्लिनरिटी में। मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज वुड इंक्लूड, फॉर एग्जांपल, लेट्स से हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लिटरेचर एज इंडिपेंडेंट परसूट्स। ठीक है, आप कोई बंदा कहे कि मैं मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स कर रहा हूँ, मेरी जो स्टडी है या जो मेरा डिग्री प्रोग्राम है मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसका मतलब कि वो कुछ कोर्सेज हिस्ट्री के पढ़ रहा है, कुछ फिलोसफी के पढ़ रहा है, कुछ लॉजिक पे पढ़ रहा है, कुछ मैथमेटिक्स के ले रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंट चीज़ों पे जिंदगी में काम कर रहा है, हेंस इज मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टीपल डिफरेंट चीज़ों को कर रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि वो रिलेट आपस में कैसे करते हैं, ये सारे डिफरेंट डिसिप्लिन का आपस में क्या ताल्लुक है, वो किस तरीके से किस तरह कन्वर्ज होते हैं आपस में, उसको इंटरडिसिप्लिनरी कहेंगे। हेंस इंटरडिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के माबैन जो है, इसलिए से ये कहा जाएगा। Approach would explore how each of those same disciplines emerged during the same time period or tackled similar themes or created culture change, etc. For example, a project on aviation yields study in mathematics, physics, history, music, and poetry. Really? Okay. Interdisciplinary, अब हम एक और इसको पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी इज एसेंशियली अ कंपैरेटिव टर्म। लेट्स सपोज वन मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन द नेमसेक द मूवी एंड द नेमसेक द नॉवल। One tries to find out where the movie has deviated from original text for good or bad. Here, an interdisciplinary research is being carried out. A multidisciplinary means having more than one discipline as separate units with no attempt to relate with one another. When we say, for instance, the Ministry of Education has introduced multidisciplinary curriculum, it means students now have several options. Some of them may study archaeology, some of them can go to music, whereas some more can specialize in language studies and so on. It simply means coexistence of various disciplines. Defining gender studies in the context of interdisciplinary study. अच्छा, मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ, और मैंने जो जितनी इस पे स्टडी भी की है, इवन दो सिलेबस के अंदर मल्टीडिसिप्लिनरी ऑफ जेंडर स्टडीज लिखी है, लेकिन जेंडर स्टडीज इज नॉट मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज को उठाकर जेंडर वाले इशूज पे कन्वर्ज करता है, उसको कोरिलेट करता है। यानी आप जेंडर स्टडीज के अंदर रैंडमली आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़े होते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होते, आप वो जेंडर के पर्सपेक्टिव में पढ़े होते हो, तो आप कंपैरेटिव्स ड्रॉ कर रहे होते हो। Gender study is a field of interdisciplinary study devoted to analyzing gender identity and expression. It includes women's studies, men's studies, queer studies, and other fields of social science. Different approaches to gender in the academic disciplines. So, पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर दूसरे सब्जेक्ट्स में किस तरीके से डिस्कस होता है। यानी कि आपके सामने पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, लैंग्वेज स्टडीज हैं, ये डिफरेंट स्टडीज हैं, वो अब कैसे जेंडर को यूज करती हैं। फिर हम देखेंगे कि जेंडर स्टडीज उन दूसरे डिसिप्लिन को अपने अंदर कैसे यूज करती है। सो जेंडर इज पर्टिनेंट टू मेनी डिसिप्लिन सच एज लिटरेरी थ्योरी, ड्रामा स्टडीज, फिल्म थ्योरी, परफॉर्मेंस थ्योरी, कंटेम्प्रेरी आर्ट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियोलिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी।
However, these disciplines sometimes differ in their approaches to how and why gender is studied. For instance, in anthropology, sociology, and psychology, gender is often studied as a practice, whereas in cultural studies, representations of gender are more often examined. In politics, gender can be viewed as a foundational discourse that political actors employ in order to position themselves on a variety of issues. Evolution कैसे हुई, इंटरडिसिप्लिनरिटी ऑफ जेंडर स्टडीज इमर्ज कहाँ से की? तो इसके सबसे अभी तो आपने लास्ट एक्टिव में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो वुमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज की शिफ्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही ये इंटरडिसिप्लिनरिटी था कि उन्होंने वुमेन स्टडीज भी ऐड कर दी, उन्होंने एलजीबीटीक्यू स्टडीज भी ऐड कर दी, उन्होंने दीगर इश्यूज को ऐड करना शुरू कर दिया, दीगर बॉडी ऑफ थॉट को ऐड करना शुरू कर दिया जो वुमेन स्टडीज का हिस्सा नहीं था, एंड दैट्स हाउ जेंडर स्टडीज वर बोर्न. So it draws upon the tradition of women's studies and feminist theories and activism. Gender studies have grown out of the need to address some of the big issues in everyday life as well as on the global arena of international politics in which cultural, economic, and political and social inequalities are played out. So that's from the paper. Gender studies within interdisciplinary movement. दुनिया में एक interdisciplinary movement emerge की. Interdisciplinary movement के कायल जो हामी अदीब हैं, लिखारी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका ये मानना है कि दुनिया के इश्यूज इस तरह के डाइवर्स इश्यूज हैं कि कोई एक इंडिपेंडेंट स्टडी के ज़रिए, आप इकोनॉमिक्स के ज़रिए वो मसले हल नहीं कर सकते, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, इनसे आप हल नहीं कर सकते. आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है जहाँ आप डिफरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज से बिल्ड करें अपने नॉलेज को, इकट्ठे यूनाइट करके, कंबाइन करके. जैसे कि वो कौन से इश्यूज हैं? माइग्रेशन है, अनइवन ग्लोबल पावर ज्योमेट्रिक्स और क्लाइमेट चेंज है. Not only are most of the big issues in the contemporary world underpinned by social divisions, including those based on sex and gender, but also issues addressed by sexual politics are often key motor of activism and change. Hence, चूंकि दुनिया में इस तरह के बड़े इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और जेंडर स्टडीज ऑटोमेटिकली फिर उस इंटरडिसिप्लिनरी मूवमेंट के अंदर एक बहुत इंटीग्रल उसका हिस्सा बन जाती है, क्योंकि इसके थियोरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं in understanding these multiply constituted social worlds. Multiply constituted social worlds का मतलब यानी दुनिया जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट इश्यूज हैं, बहुत उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं. जैसे हम जब माइग्रेशन की बात करेंगे दुनिया में जो हो रही है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन की वजह से, या रेफ्यूजीज जो डेवलप हो रहे हैं वॉर्स की वजह से, तो अच्छा वॉर का इम्पैक्ट ख़वातीन पे स्पेसिफिकली कैसा होता है, लोअर क्लास ख़वातीन पे कैसा होता है, एथनिक माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन पे कैसा होता है, वो भी हमें डेवलप करना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स को लेके आना पड़ेगा समझने के लिए इस चीज़ को. इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडीज़ को लाना पड़ेगा बीच में. तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑटोमेटिकली ही के ज़रिए मुमकिन है. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं अगर आप दुनिया को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं. अच्छा, तो इंटरडिसिप्लिनरिटी ऑफ जेंडर स्टडीज विद अदर एकेडमिक डिसिप्लिन्स, वो कौन से एकेडमिक डिसिप्लिन्स है जिनके साथ जेंडर स्टडीज ओवरलैप करती है? पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि कैसे जेंडर डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स अपने अंदर जेंडर डिस्कस करते हैं. एंथ्रोपोलॉजी अपने अंदर जेंडर डिस्कस करती है, आर्ट्स अपने अंदर करती है. इसी तरह जेंडर स्टडीज कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को उठा के अपने सब्जेक्ट में यूज करती है? तो वो डिफरेंट ये सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं. ये मैंने अपनी तरफ से ये मेरा अपना एक इंटरप्रिटेशन थी, अपनी एक थॉट प्रोसेस से मैंने इसको डेवलप किया है कि वो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जेंडर स्टडीज़ के एग्जिस्ट करते हैं वो और किन किन बॉडी ऑफ नॉलेज से, फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ ओवरलैप करते हैं. तो दैट्स व्हाट आई हैव कम अप विद. यू कैन इरेज, ऐड, ऑल्टर according to your own understanding to this as well. So for instance, my understanding is that liberal feminism is overlapping with ideas from political science, law, economics and history. Obviously gender studies तो इन सब में होगा. Marxist feminism comes from political science, economics, history and particularly the concepts of Marxism, of course. Socialist feminism comes from political science, economics, history, Marxism and socialism. Psychoanalytical feminism comes from psychology and linguistics. Postmodern feminism comes from political science, literature, and linguistics. Intersectional feminism comes from political science, economics, history, literature, linguistics, cultural studies. Men's feminism comes from men's studies, psychology, literature, and history. Ecofeminism comes from environmental studies,
economics, international political economy, development studies. Black feminism comes from economics, political science, history, post-colonial studies, cultural studies, and critical race theory is one of the most important theories within it. Wid, Wad, and Gad approaches to gender comes from economics, development studies, political science, and history. Colonial and capitalist perspective comes from post-colonialism, economics, history, and cultural studies. Modernization theory, world system theory, and dependency theory comes from economics, development studies, international relations, history, law, international political economy. And obviously, all of these overlap with sociological concepts as well. So I've tried to attempt and look at the syllabus and concepts within gender studies and how they relate to and how they overlap with different other social science courses and subjects. अच्छा, अब जो हमने अभी डिस्कशन सारी की, अगर हम उसका सिंथेसिस करें तो बेसिकली मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा विकेट प्रॉब्लम्स के साथ, इंटरडिसिप्लिनरिटी को. विकेट प्रॉब्लम्स are is a wicked problem is a problem whose social complexity means that it has no determinable stopping point. Basically ये wicked problem की बात की जाए तो कुछ ऐसे issues होते हैं कि जिनको अगर आप उसकी एक चीज ठीक करो तो उसकी दूसरी चीज खराब हो जाती है, अगर आप उसकी दूसरी चीज ठीक करो तो तीसरी चीज खराब हो जाती है. यानी उसका कोई एक आसान सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता. जैसे फॉर इंस्टेंस पॉवर्टी इज अ विकेट प्रॉब्लम. पॉवर्टी में और एक खास कैरेक्टरिस्टिक विकेट प्रॉब्लम की होती है कि आप उसे उसके लिए आपको इंटरडिसिप्लिनरी सोल्यूशन ऑटोमेटिकली चाहिए होता है. सो पॉवर्टी के अंदर आपको इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंस की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट स्टडीज की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी. डिपेंड करता है आपकी सोशल ग्रुप में किस एरिया में बात कर रहे हो, उस हिसाब से आपको हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज, इन सब की एप्लीकेशन भी वहाँ पर करनी पड़ेगी. उनके बिहेवियर को समझने के लिए सोशियोलॉजी की एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी. सो दिस दैट व्हाट विकेट प्रॉब्लम इज. सो द आइडिया इज कि दुनिया में आप बहुत सारा विकेट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए जेंडर स्टडीज की इंटरडिसिप्लिनरी होना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत मुफीद है उन इश्यूज को एड्रेस करने में, क्योंकि जेंडर स्टडीज हमने जैसे डिस्कस किया अभी पीछे इतने डिफरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ ओवरलैप करती है और उस पर बिल्ड करती है. दैट्स व्हाई इट कुड बी एंड इट इज इंस्ट्रूमेंटल to solving those problems. Gender studies demand an understanding of power relations and thus of politics within and beyond government, as well as the social, economic, and cultural processes that are the subject of arts, humanities, and social science disciplines. The structures of oppression and the processes through which economic, social, and cultural forces intersect in different contexts, both actual and virtual, and within systems of governance. The processes of racialization and ethnicization and class-based divisions intersect, and gender studies highlights the need to make sense of these processes, and particularly to why it is necessary to understand them together rather than separate discrete forces. Hence, gender studies एक interdisciplinary study होने के तहत different interpretations और different types ऑफ स्टडीज के साथ ओवरलैप करने के वजह से वो डिफरेंट तरह के इश्यूज के मुतल्लिक एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को अप्रोच रखती है और उसको हल करने में मदद दे सकती है. इसको आप क्रिटिकल अप्लेजर का नाम भी दे सकते हैं. इसको आप मेरे जिस तरीके से मैंने बयान किया उस तरीके से भी आप बयान कर सकते हैं. दैट is completely up to your choice. So this was all from my side in this lecture. I hope it was helpful for you guys, and I'll see you guys in the next lecture.